So today we are studying about reflection of light. So first we have to know what is light. Light is a form of energy which creates sensation of visibility. So what is reflection? Reflection, the return of light into the same medium after striking a surface is called reflection, as you can see here. So what are the properties of light? Form of energy, travels in straight line and in a straight medium. इफ अगर आप लाइट को कर्व में चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगी. थर्ड, ट्रेवल्स वेरी फास्ट. जो लाइट होती है वो बहुत तेज स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी, रिप्रेजेंट्स बाय सी. जो रे होती है, रे, अभी तक आपको पता होगा कि रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, लेकिन नहीं. रे इज ऑल्सो अ वेव, बट वेव with higher frequency is ray, and lower frequency is known as wave. The frequency, this, the oscillation, the to and fro motion is very small, like negligible, so it looks like going straight line. So light have two natures, one wave nature and second is particle nature. So what is particle nature? Particle nature is that when light is hit to a metallic sheet, जो लाइट होती है जब मेटेलिक शीट पे गलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं. When we perform it in a closed container, the electron form and freely flow it container charge and फ्लो फॉर्म सोलर पैनल्स. तो सोलर पैनल्स होते हैं वो इसी नेचर पे काम करते हैं कि जब जो सनलाइट होती है मेटेलिक शीट पे वो घली और उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए. और यही चीज़ अपन जब क्लोज कंटेनर में करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स आके पूरे में घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं. सो फर्स्ट वी विल know the kinds of reflection. There are two types of reflection: regular reflection and irregular reflection. So what is regular reflection? Regular reflection occurs when a beam of light falls on a smooth and polished surface. Regular reflection वो होता है जिसमें पॉलिश सरफेस हो और बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो. इरेगुलर में क्या होता है, जब जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस पे नहीं होता है, पॉलिश सरफेस पे तो होता है पर स्मूथ पे नहीं होता है. Some terms related to reflection: incident ray, like this is a plane mirror. देखा है आपने जो आपके कमरों में लगा है मिरर, वही प्लेन मिरर होता है. We take a point here and throw a ray. This is incident ray. So what is incident ray? The light ray striking a reflecting surface is called an incident ray. ये जो लाइट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब गलती है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं. ये पॉलिश सरफेस हो गया. सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइट आती है, जहाँ पे ये गलती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एक बार बुक में पढ़ लेते हैं. द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? व्हेन द इंसिडेंट रे strikes on a reflecting surface and reflects back is known as reflecting surface. This is reflection of light. This is reflection. What is normal? The perpendicular drawn to the surface at the point of incidence is called normal. यहाँ से अगर अपन एक perpendicular line निकालें तो ये होता है normal.
The angle between incident and normal is equal to the angle between reflection and normal. Plane of incidence. The plane containing the incident ray and normal is called the plane of incidence. So what is plane of reflection? The plane containing the reflected ray and the normal is called plane reflection. So this is the mirror and the diagram of all the terms related to reflection. What are the two laws of reflection? The angle of incident is equal to the angle of reflection. As I told you before, the angle of incidence is equal to angle of reflection. This x is equals to this angle. This angle is equals to this angle. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. As tell you before that light travels in straight line and in same median. So these all three things are in the same median. So we can take an example. If angle of incidence is 30 degree, so the angle of reflection will be, yes, you can tell, obviously it's 30 degree. Formation of image by reflection. From each point of illuminated object, rays of light travels in all directions. To find the position of image of an object formed by a plane mirror after reflection, we need to consider at least two rays of light. So types of images: real image and virtual image. So real image are the image which forms inverted. If this is an object, so the image will form like this, inverted. This is real image. And what is virtual image? The the image form is erect. If the object is straight, the image will be straight. So we can, what is the difference between real image and virtual image? A real image is formed due to the actual interaction of reflected rays. A virtual image is formed when the reflected rays appear to meet when produced backwards. A real image can be obtained on a screen. A virtual image cannot be obtained on a screen. The real image is inverted with respect to the object. A virtual image is erect with respect to the object. Image of a point of object. So we take a point object. This is a point object. We emit two rays from it. One parallel and second like this. So these will reflect. This and this. And the image will form here. This is normal 1 and this is normal 2. This is incident 1 and this is incident 2. This is reflector 1 and this is reflection 2. Now we will take an example of extended object like this pen. इसमें कुछ अलग नहीं है. सॉरी, इसमें बस दो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स ले लीजिए. एक यहाँ से इंसिडेंट डालिए, एक ये रे हो गई, एक दूसरी हो गई. नीचे वाले ऑब्जेक्ट से भी ऐसे रे ले लेते हैं दो. एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई.
अब जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी, ब्लू पेन से बना देते हैं, ये पीछे इधर गई, ये इधर गई, ये इधर, ये इधर, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये देखते हैं। ये जो सरफेस है ये इधर तक जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से ऐसे, यहाँ पे इधर, इधर ये दोनों पॉइंट मीट हुए और ये हो गया अपना इमेज। सो ये इमेज फॉर्म कौन सी हुई? वर्चुअल इमेज। जो प्लेन मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है। और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट and of same size of object. If object is of 3 centimeter, the image form is also of 3 centimeter. If object is 10 centimeter away from the mirror, the image is also will be from 10 centimeter away from the mirror. So what is lateral inversion? The interchange of left and right side in the image of an object in a plane mirror is called lateral inversion. जैसे ये P बनाते हैं, प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है।